नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे फ्लैगशिप कैंपेन मिशन स्वच्छता और पानी के स्पेशल टेलीथॉन में। रैकेट और नेटवर्क 18 का मिशन स्वच्छता और पानी एक जन आंदोलन है स्वच्छता की सुरक्षा के लिए। Absolutely, Anand. It is a movement, ladies and gentlemen, it's a movement for inclusion in sanitation. It's a call for equality of gender, ability, class, caste in our sanitation ecosystem. It's a push for clean, hygienic toilets. It's a public appeal for the right to dignity and an effort towards creating behavioral change and creating change at a national level, Anand. Absolutely. Milkar lein ye zimmedari. That's going to be the message, Mission Swachhta aur Paani. It is a day of priceless words of support. In an invaluable letter to the entire Mission Paani team, the President of India, Draupadi Murmu ji, has praised Network 18 and our partners, Racket, for championing a national cause. Can we have that letter, please? It is a very special letter that the President has written commemorating the launch of this campaign. You can read it on your screens. It is being projected, and right here, as we bring out this very special gesture by the President of India, ladies and gentlemen. The President has appreciated our vision of making water conservation a nationwide campaign. We sincerely thank the President of India, Draupadi Murmu ji, for such kind words, and it is this appreciation and kindness that keeps us going. Absolutely, it really does keep us going. आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है और इस मौके पर मिशन स्वच्छता और पानी पूरे देश को एक मंच पर लेकर आया है, जहां हम बातचीत कर रहे हैं सैनिटेशन एम्पावरमेंट की। अगले 8 घंटे तक हम बात करेंगे गवर्नमेंट से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, सैनिटेशन वॉरियर से, पूरे देश से और कई दूसरे देशों से आए पॉलिसी एक्सपर्ट से, लेकिन सबसे जरूरी हमारे देश की जनता से। बिल्कुल, जनता से। We are going to ask each of them, what are the 5 ways in which each one of us can create an empowered sanitation and water status for the nation. In this Voice of India, ladies and gentlemen, which we are going to collate as the day progresses, will decide the road ahead for this campaign. It is a 5-point mandate wherein we are the change, and the change, Anand, begins with us. Swachhta aur Paani मिलकर ले ये जिम्मेदारी। बिल्कुल। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय कुमार, एक बहुत ही खास जगह से। सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। नमस्ते अक्षय। आज मैं गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया में हूं, एक बहुत ही खास जगह पर खड़ा हूं, बिल्कुल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है? 182 मीटर यानी कि 600 फीट, जो हमारे देश के सबसे बड़े स्टेट्समैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेटेड है। गुजरात सरदार पटेल का होम स्टेट है और जिस इंसान का सरदार सबसे ज्यादा सम्मान करते थे और जिनका सम्मान पूरी दुनिया भी करती है, वो है हमारे बापू महात्मा गांधी। गांधी जी पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें ये मालूम था कि देश बनाने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने एक सैनिटेशन रेवोल्यूशन शुरू किया। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है, और जब तक हम अपने खराब आदतों को नहीं सुधारेंगे और अपने शौचालय को क्लीन नहीं रखेंगे, तब तक आजादी की कोई कीमत नहीं। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया, जिसे ओपन डेफिकेशन यानी खुले में लैट्रिन करने की पुरानी आदत को खत्म किया जाए, टॉयलेट्स बनाए जाएं और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाए। मिशन स्वच्छता और पानी ने उसी मकसद को मजबूत करने की कोशिश की। इट इज अ जन आंदोलन फॉर सैनिटेशन सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस बिल्डिंग मिशन फॉर राइट टू डिग्निटी। यह मिशन है कि लोग अपनी आदतों को सुधारें, क्लीनलीनेस और हाइजीन को अपनाएं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस पहल में और मिलकर लें ये जिम्मेदारी गांधी जी और सरदार के इस गुजरात से, जहां स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। तो ये बात हुई
हमारे केवड़िया की। अब हम चलेंगे मुंबई, जहां अगले 8 घंटे तक हम स्वच्छता और पानी से जुड़ी बेस्ट प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो आइए मिलकर ले ये जिम्मेदारी। मिलता हूं आपसे मुंबई में। And absolutely, we are going to be joined by Akshay on his way. He will be here with us very, very shortly. But we have a whole lineup of guests. A very special guest joining us here this morning to support the cause is going to be part of this journey with us. Ladies and gentlemen, please put your hands together in welcoming the wonderful Parineeti Chopra. And here she is walking up on stage. Hi, Parineeti. Good to have you. Namaste. Hi, you're looking lovely. How Thank sweet. You. Thank you so much. Hi everyone. Very Thank nice you. to see you, Parineeti. Thank you so much. So today, how would you describe yourself as an actor, as a singer, as a social media influencer with 38 million followers? Who is Parineeti Chopra today? Oh my gosh. I suddenly feel very important. You are. I think I'm a citizen in progress, yeah. I mean, of course. That's a nice description. I am that. I mean, I think we all are. I think we have one life to live and there is so much to do. We shouldn't be defined just by our work. We shouldn't be defined just by our social media or just by films. I wouldn't be like to be known just as an actor. Actor, singer, daughter, wife one day. That's very important. You know, there's so much. I'm a citizen in progress. I think till my dying day, I'm going to try and do something new and keep adding to the chapters of my life. And let's see what my life story is going to be. Wow. It will be a hit. That we're sure of. I want a blockbuster. Hit is not enough आजकल. वो भी आएगा. धीरे-धीरे आप ऊंचाई छू रहे हैं. Thank you so much. Thank you. अच्छा, परिणीति एक बात बताइए. आज इस मंच पर आप हमारे साथ आई हैं. ये मंच है स्वच्छता और पानी का. It's a big message वर्ल्ड टॉयलेट के लिए. हमने एक कॉल टू एक्शन मांगा है हमारे दर्शकों से. हमने उनसे पूछा है कि वो 5 चीजें क्या हैं जो आपको लगता है हमें मिलकर ये अगर जिम्मेदारी लेनी है. तो आई एम गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन. ये 4-5 चीजें जो आपके दिमाग में आता है जो हमें करने की आवश्यकता है एज अ कंट्री, एज अ पीपल. देखिए, ये जवाब देने के लिए ना मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि एक तो मैं एक छोटे से शहर से आती हूँ, अंबाला से. और दूसरा मैं एक औरत हूँ. तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, using a bathroom is very different for men and it's very different for women. Just biologically speaking, हम visuals में नहीं जाएंगे. Absolutely. But that experience is so different and hence we require a minimum basic level of infrastructure and cleanliness. So I don't know if it's 5 or 10 pointers, but I genuinely feel cleanliness and usage of water is something that I have struggled to see at a certain level in our country. And I feel it's amazing because 10 years ago we used to complain, अरे हमारे लिए infrastructure ही नहीं बना, अरे हमारे लिए तो toilets है ही नहीं, हमारा वो complain होता था. आज के दिन हमारे पास वो है. I see such a difference when I take road trips. I see public toilets there. When I see airports, train stations, the public toilets are so amazing. The infrastructure is provided to us. The citizens are not doing what they should. So here are my points. I feel there's more responsibility to be given to the men out there. Absolutely. Because I genuinely feel if they keep it clean, because women are a little more responsible because we know exactly what the next woman bichari will have to go through. So we're quite conscious. But I think overusage of water, wet bathrooms are the worst thing because they are breeding bacteria, they are breeding diseases. You could slip and fall. So honestly, ये जो स्वच्छता और पानी है, ये सबसे ज़्यादा इन bathrooms में use करनी चाहिए because हम लोग over splash करते हैं. हमने थोड़ी bill pay करना है. जितना मर्जी पानी, you know, I have entered airports and अभी भी नल चल रहा है. That previous person वो आधे घंटे पहले निकला या 1 घंटे पहले निकला हम को नहीं पता. So I feel honestly the #1 problem is overflow of water. अगर हम एक simple सी चीज करें कि नल बंद कर दें और चले जाएं और सूखा रखें, I think we'll all be very happy. और साफ रखना कि अगला जो आ रहा है जब वो टॉयलेट्स है उसको साफ रखना. आपने सही कहा कि मर्दों की जिम्मेदारी है. जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि एक आंकड़ा है कि 68% in our country it's women in homes
who are responsible or who are cleaning the toilets, even in the home. Yeah. The men don't do it. Yeah. आज World Toilet Day तो है, आज World Men's Day भी है. और एक और day है, और एक और Now take a hint, yeah. Hint ले It is लीजिए. Women's Entrepreneurship Day as well, and to the point that you were making, Parineeti, that it holds, you know, the lack of the lack of a clean toilet holds women back from looking for opportunities to go out to work or just live their lives. So on Women's Entrepreneurship Day and World Men's Day, the men have to do better. Absolutely. And The men have we have to send out this message as well. True, the men have to come together and they have to take this pran, or maybe one of the things, change makers, that they will help and they'll make sure that they also contribute towards keeping the toilet clean. So should we call two change makers on? Yeah, absolutely. We must. Joining us now, two very special guests from Reckitt, Saurabh Jain, Regional Marketing Director, Hygiene, South Asia, Reckitt, and also Ravi Bhatnagar, Director, External Affairs and Partnership, South Asia. A round of applause for the two gentlemen. Hi. Thank you for partnering with us and also working with us. Thanks, good to see you. Lovely to meet you. Same here. Hi, Ravi. Thank you so much. Hi, lovely to meet you. Hi. So let me first ask you, Ravi. Lost your mind. What is the vision when this whole campaign started? Because when we wanted to do it because Swachh Bharat and Swachhta happened, and then Reckitt came in and partnered with us, and you've been with us through thick and thin. Yeah. So it's now become a mass movement. Yeah. I will tell you honestly, and I'm saying this on air, I've had people come out and say, "Aap telethon kar rahe hain, hame aana hai. We want to be part of this. We want to join the cause. So join us." I was one of them. Thank you. So very interestingly, like the journey started with the Prime Minister's announcement from the Red Fort. And we were among the first few companies in India who said like, yes, we are together and we should do it collectively and we should not stop. It should be a mass movement. We should have, civil society with us. We should have the media with us. We should have the government with us. We should have the policymakers with us. We bring the best practices across the world because Reckitt is in 60+ countries, and we thought like, there's a lot of mutual learning from one country to another. We bring everything put together and let's make it grand. And the behavior change should take place. In the earlier conversations, when Prime Minister Modi met Theresa May, we were the one as a company who gave the midterm health check of Swachh Bharat to both of them. The great thing is like, the PMO took the cognizance of that. And there was a major change in the spends on behavior change from the overall total budget kitty. Right. Because constructing toilets was the one thing. Most important is sustaining those. Yes. And like Parineeti, you just rightly said, like, involving men also in the whole process. Oh, absolutely. And yes. इन दोनों को आप ही बोलो, परिणीति और श्री बोलो, इन दोनों को बोलो, दोनों men हैं, इन दोनों को बोलो. So change begins with us. Absolutely Change begins with us. So that was the first campaign we started with. I'm very proud to tell, like, the change begins with us, and we are still making it as a mass movement. Together with Network 18. And we're very sure, like, in the times to come, like, the behaviors are going to stay. In the most difficult terrains also in India. Absolutely. And with, some of the best brains working in the Reckitt. Right. And the best brains in Network 18 and others. Absolutely. We'll be co-curating the program in such a way, like, that will show the path to the other countries which are still struggling. Absolutely. The main theme for this World Toilet Day is making the invisible visible. So to make it visible, it's important. Like, we learn, we nurture. So what are the solutions that you're going to bring? आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि समस्या है तो उसका समाधान चाहिए. हम तो प्रॉब्लम नहीं देखते हैं, हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं. तो आप बताइए. 100%. अगर आप देखें, I mean, जब like Ravi was saying, in 2015 when we started, and till now, I think we made massive stride as a country, right? I mean, we were talked of as an open defecation country, and we've now got it free. But even if you look now, statistically, we're still 156th rank as far as sanitation index is concerned. So still, while we acknowledge and we can thump our back, etc., to say we made massive progress, there's a long distance to go. And I think the inclusion of the word "mil kar liye zimmedari" is supremely important in this, because what policy makers could have done, what government and all big time efforts could have done to get us here has happened. But now it is all about individuals to come together as collective society, like Parineeti was talking about gender, but beyond gender, also about socio-economic system. Everyone needs to now contribute to take the sanitation forward. Do I have time to interject? Yes, of course. We were talking about behavioral changes. I'm sure a lot of you will relate to this.
when a group of 5 girls tries to use a public bathroom, there'll always be that one leader who goes and checks, and then she comes out and she says, good to go. ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने कभी लड़कों को करते हुए देखा है? लड़के 5 के 5 अंदर घुस जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि ठीक ही होगा. So I feel, you know, we're joking about it, but it's years and years of experience. It's a real challenge. It's legit. Like I've been on highways where I've sent my dad or my brother to say, you guys can go and use the bathroom anywhere, but let me know if I can, because I can't go out in the open. Yeah. Boys can go anywhere. No, you're right. It's a social problem, as Parineeti was saying. It's an economic problem. It's a health problem as well. So what's the road ahead, Saurabh? Take us through what's planned for the next steps. I think just to Parineeti's point, I mean, you were talking about female. I mean, even when we have to stop, when we are going on the road trip and we have to stop, as males, if the male toilet is bad, we don't even like, I look back to my daughter and my wife and I like don't even step out because like if this is the state, it's not there. There you go. I think the single biggest thing, like you're saying, is the behavioral shift that's required. I think if I tell you statistically 50% of the people who have toilet in India today still clean only with water and detergent. Khali pani छिड़क दिया, detergent डाल दिया, उसे साफ कर लिया. Think of it, it is a hotbed of germs, right? Even at individual household level, as much as it is in public domain, public toilet domain as well. So thereby the responsibility again has to be shared. It has to be everyone's to make sure that toilet to ghar pe aa gaya hai, but usko saaf aur surakshit nahi rakhenge, so we will spread more germs at home. You know, and that's the behavioral. And that's what I want to pick up on, Saurabh. As you said, it is shared responsibility. And Ravi, I want to understand from you what the experience has been working, not just with the union government, but working with state governments and more importantly, working with local administrations, because this cannot be a top-down thing. It has to really be a grounds-up or a bottoms-up approach, right? Very interesting again, like, you know, we started with the hygiene index. It was the Reckitt which started the hygiene index. We started with the one city in India. From one city we reached to 10 cities, from 10 cities to 20 cities, from 20 cities to 25 cities, and further. The birth of the Swachh Sarvekshan we saw ourselves, with a lot of data and inputs which started with the hygiene index, what we created. So they were all intertwined into that. And now there's a ranking, like indoors ranking, you see, you know, and other places ranking. So good part is there's a movement, and there's a good movement, but all the efforts needs to be sustained. You know, you're talking about cities, Anand, and we do have some of these administrators with us. Yes, exactly. The people who have to do it. But just as we call them, जो ये समस्याओं का समाधान, जो solutions की बात करते हैं, आप दोनों के लिए task है. आप you're in the business of sanitation, तो हर toilet को साफ रखने का काम हार्पिक का है, तो हार्पिक अगर गलती भी आपकी solution क्या मिला? आपको करो. But ऐसे हजारों sanitation warriors भी हैं जो बिना थके, बिना रुके देश के लिए काम कर रहे हैं, और इनमें से कुछ ऐसे IAS ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से अपनी पोस्टिंग वाले इलाकों को ही बदल दिया. इन्हें अपनी इंस्पायरिंग सर्विस के लिए साल 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भी दिया गया. स्वच्छ सर्वेक्षण की बात अभी रवि कर रहे थे. ईशा कालिया जी हैं, IAS जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी. पंचानिधि पानी, IAS एंड फॉर्मर कलेक्टर ऑफ सूरत, जो कि वहां पर कोविड कलेक्टर के नाम से मशहूर हैं, एंड करंटली सर्विंग एज वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर. प्रतिभा पाल, कमिश्नर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस. नमस्ते. मेरा पहला प्रश्न है पानी साहब से. पानी साहब कहां हैं? आइए आइए पानी साहब आइए. Welcoming Mr. Paani on the Mission Paani stage. So the Odia roots now setting base in Gujarat. He was Commissioner Rajkot, Surat, and now Vadodara. तो एक एक करके गुजरात में आप कर रहे हैं सफाई पर. एक बात बताइए, वहाँ तो कोविड कलेक्टर थे सूरत में, वडोदरा में अब आपको स्वच्छ कलेक्टर होना पड़ेगा. सूरत में भी काफी स्वच्छता के बारे में काफी अच्छा काम हुआ है. सूरत में खास करके जो गंदा पानी, जो ड्रेनेज का पानी है, वो पानी गंदा पानी होके वो डिजीज फैलाता है. लेकिन उस पानी को हम लोग रिसाइकिल और रीट्रीट करके 140 करोड़ का इनकम रेवेन्यू जनरेशन सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है. दैट इज मैसिव. सेकंड, जो सूरत का जो कचरा है, वो कचरा हमारे लिए कंचन है. वो सर्कुलर इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट है, वो सर्कुलर इकोनॉमी वहां एस्टैब्लिश किया गया है. कचरा कहीं भी कचरा नहीं है, उसको हम मानते हैं कचरा है. कचरा को अगर रिसाइकिल और रिप्रोडक्ट किया जाए तो उससे काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो काफी अच्छा
हमारे लिए पूरा स्वच्छ शहर बनाया जा सके। ईशा जी भी हमारे साथ हैं। ईशा जी आइए। एंड प्रतिभा जी इज ऑल्सो विद अस। शी इज ज्वाइनिंग अस वाया द लाइव लिंक। Thank you. Hi, ma'am. Hi, lovely. Good to see you. Thank you so much for joining us. Namaste. Thank you for coming. आइए। Isha ji, as we were just talking to Mr. Paani here, and he was telling us what they managed to do both in Surat and now in Vadodara. I want to understand from you what the experience has been like in Punjab. What were the big challenges that you had to face, and what are the priority areas that you're now focusing on? As a state mission director for Swachh Bharat Urban in Punjab, so we're doing a lot of things in Punjab right now. So the first focus was to instill the sense of awareness and consciousness amongst people that cleanliness and sanitation is important. So for that, we launched a campaign recently that is Mera Shehar Mera Maan. So that means my city, my pride. Yes. So I take a sense of ownership to make my city clean, because Swachhta is all about bringing about a behavioral change, and it is a gradual ongoing process. So what we do is every Friday we take a ward, the entire corporation team goes there with all the paraphernalia. We clean up the drains, the roads, the garbage vulnerable points, the hanging wires, the community toilets, public toilets, with community participation. So all the elected representatives are involved, the community is involved. So therefore, it actually brings in that thing that it is important. So we have a team of awareness generation people who tell you that how to segregate waste. Right. Dry and wet waste, how to actually do door-to-door collection, and how to do home composting. So all these things, apart from the community toilets and public toilets that we're talking about, a very important component of making cities clean is source segregation, Absolutely. processing Waste of management. waste, and Yeah. waste management, and getting rid of big legacy waste mountains that we have in our cities today, and that is our main priority in Punjab as of now. Well, we want to get a little more detail from you on the outcomes of this awareness campaign that you're running in Punjab. But let me also welcome Pratibha ji into the conversation. Pratibha ji, many thanks for joining us. Unfortunately, we would have loved to have you here on the stage, but you're joining us from Indore. Appreciate that. Take us through what the experience has been like in Indore. Of course, the track record speaks for itself. How do you plan to build on the momentum that's already been created? नमस्कार। इंदौर की अगर हम लोग बात करें, जब हम स्वच्छता और पानी की बात कर रहे हैं, तो ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं इंदौर के 6 लाख घरों की और 35 से 40 लाख पॉपुलेशन की। तो जो इंदौर में हम लोगों ने इन 3 चीजों पर फोकस किया है, जन आंदोलन के साथ लोगों को जोड़ने के साथ में मुख्य 3 चीजें, जो स्वच्छता का मैनेजमेंट है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम हर घर से कचरा अलग अलग लेते हैं, 6 तरीके के डब्बों में लेते हैं, हर दिन कचरे को प्रोसेस करते हैं और उस कचरे से प्रोसेस करके सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ, वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जाते हैं और बहुत सारा इनकम अर्न करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, वाटर और सैनिटेशन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो टॉयलेट्स का हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स का हो, यूरिनल्स का हो, ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। इंदौर में सभी 6 लाख घर सीवेज सिस्टम से, और वो सीवेज सिस्टम से कनेक्ट होकर के 100% जो ड्रेनेज सीवेज है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, रीयूज करते हैं 30% पानी को बचाने के लिए एक और चीज जो हम लोग कर रहे हैं लगातार, वो वाटर कंजर्वेशन को है। इंदौर के 6 लाख में से 1 लाख घर ऐसे हैं जो आज पानी बचा रहे हैं और जिन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर हाउस होल्ड हो। तो इस तरीके से हम लोग स्वच्छता, सैनिटेशन और पानी, इन पर एक साथ काम कर रहे हैं। प्रतिभा जी, जो हमारी सफाई मित्रों की टीम है, जो डेडिकेटेड टीम है लगभग 7000 लोगों की, उनमें से 70% महिलाएं हैं। इस बात का मुझे गर्व है और लगातार जो हर मौसम में काम करते हैं। साथ ही जो यहाँ की जनता है, इंदौर के लोगों में जो ये प्राउड बैगेज है कि वो देश के सबसे साफ शहर से आते हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम कचरे को कभी भी मिक्स करके ना दें। हम जब भी कहीं बाहर हो, कहीं भी लिटरिंग ना करें। अगर हम बाहर हैं तो टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, अपने टॉयलेट्स को प्रॉपर्ली कनेक्टेड करके रखें सीवेज से। तो इस तरीके की तैयारियां इंदौर ने पिछले 6 सालों से की हैं। हर साल हम लोग कुछ नया करते हैं। इस वर्ष की तैयारी ये है कि एक बार जमीन का कचरा साफ हो गया, पानी साफ हो गया। प्रतिभा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हवा के साफ करने की बारी है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने की इंदौर ने तैयारी की है। प्रतिभा जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ। थोड़ा सा डिले होगा आपको जब तक आपको आवाज पहुंचे, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोहित शर्मा भी इतनी बार आईपीएल नहीं जीत पाए जितनी बार आप इंदौर क्लीनेस्ट सिटी का ये खिताब जीते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, फॉर्मूला क्या है? ऐसा क्या कर रखा है आपने वहां इंदौर में कि इंदौर के लोग सबसे स्वच्छ हैं या इंदौर शहर सबसे स्वच्छ है?
कैप्टन की बात करूं तो टीम इम्पोर्टेंट होती है, तो इंदौर की टीम बहुत इम्पोर्टेंट है, टीम बहुत कमिटेड है। टीम में अगर मैं बात करूं तो हमारी टीम है हमारे इंदौरियों की, जो इंदौर के 35 से 40 लाख लोग हैं। हमारी टीम में मेंबर्स हैं हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे एमपी साहब हो, एमएलए हो, मेयर साहब हो, या हमारे जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो फ्रंट फुट पर हमेशा खेल करके सफाई के लिए बैटिंग करते हैं। टीम की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मीडिया है लगातार जो पॉजिटिव कवरेज के साथ में काम करती है, और जो नगर निगम की टीम है जिसमें 17,000 म्युनिसिपल स्टाफ है, तो ये सभी टीम मिलकर के इस काम में लगातार काम करती है और हमेशा काम करते हैं कि शहर के लिए, स्वच्छता के लिए जो नए मैंडेट है यहाँ पर। And पानी जी क्या कहेंगे? There's a nice contest going on. Punjab's also won 4 awards at the Swachh Bharat mission. Isha ji, actually, see, Indore is always, a very inspiring model. And what makes Indore different? Because as Pratibha told, it's about, community involvement. We get a lot of information in our WhatsApp group also that we have in Government of India. So they tell कि एक दिन होता है इंदौर में कि जब सब छुट्टी पे होते हैं और उस दिन लोग खुद सफाई करते हैं. So that kind of community एक बार movement बन जाए. And people now have taking pride in this कि हम इंदौर से हमारा शहर साफ रहता है. तो अगर वो वाला जज्बा आ जाए लोगों में कि हमें अपने शहर को साफ रखना है, क्योंकि कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैन डू ओनली वन बिट. Absolutely. So when it comes to everything, चाहे littering on public roads है, toilets है, आपके dustbins है, but then also littering का issue है. So everything is about bringing about the change in behavior and having that passion कि हमने अपने city को clean रखना है. We're talking that makes Indore very different. It does. We're trying to do this, and we're talking sure about passion. We're talking about shared responsibility and citizens' participation. पानी जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, उस पे आपका क्या कहना है? व्हाट इज बीन द एक्सपीरियंस सो फार? काफी जरूरत है. देखेंगे तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे रोड स्वीपिंग मशीन हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, चाहे हमारे जितने भी काम हो, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल रहता है. चाहे एजेंसीज हो, चाहे ऑपरेटर्स हो, वो सब उनका भी कमिटमेंट होना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में जब हम बोलते हैं तो एनजीओज भी हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, काफी सारे लोग. जैसे सूरत में मैं आपको बताऊं, ये जो सोर्स सेग्रीगेशन की बात है, सोर्स सेग्रीगेशन अगर नहीं होता है तो कचरे का वैल्यू 0 हो जाता है. अगर ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और दूसरे वेस्ट अलग हो जाता है तो उसको वो रिसाइकिल करके फिर से उससे पैसा लेते हैं और उसको सब लोग चाहते हैं कि क्लीन. आपको मैं बताऊं, ये जो कोट्स हैं, ये जो पेट बॉटल्स हैं पानी पीने का, वो लोग फेंक देते हैं. उसका 10 लाख से 15 लाख बॉटलों से काफी हजार रनिंग मीटर का सूट पीसेस बनता है. और वो पॉसिबल हुआ है प्राइवेट सेक्टर से. मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर जितना अच्छा से और जितना तेजी से इस सेक्टर में आए तो उससे अच्छा स्वच्छता का जो स्पीड है, जो स्केल है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा. और पूरे देश बात कर रहे हैं तो एक मेरा आपसे सुझाव है और रिक्वेस्ट है कि आगे से जब आप, कई लोग, हम लोग मैप्स यूज करते हैं ना, तो इस मैप में कहीं आपके पास कुछ पॉपअप आ सकता है कि क्लीन टॉयलेट हियर. यस है. हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है, आप कहीं भी गूगल लोकेशन पे ये करेंगे और वहां बोलेगा कि ये आपके 100 मीटर्स 200 मीटर्स में आपका टॉयलेट्स हैं और ये एस्टैब्लिश. और पहले टॉयलेट, आपसे यही कहा, टॉयलेट्स हैं पॉपअप होता है, क्लीन टॉयलेट है. ये बात कि जो टॉयलेट पॉपअप होगा वो वही पॉपअप होगा जो कि क्लीन हो. एब्सोल्युटली. आजकल क्लीन टॉयलेट से ज्यादा अभी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जैसे फीमेल्स हैं, सबके लिए स्पेशल व्यवस्था अभी शुरू हो गया है. अभी पहले जो नहीं था, अभी हर टॉयलेट्स में ये व्यवस्थाएं आ गई है. अभी ये मूवमेंट को, जैसे ईशा जी ने बताया कि सब लोग मिलके, जो यूज कर रहा है वो पहला स्टेक होल्डर है. वो अगर क्लीनली उसको यूज करेगा तो नेक्स्ट आदमी जो है उसको प्रॉपरली यूज कर सकता है. आई थिंक पॉइंट यही है जो मैं समझ रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स हो या प्राइवेट सेक्टर का फोर्स हो, वो लोग कभी भी हमारी जो पॉपुलेशन फोर्स है उससे बड़ी नहीं हो सकती. वी सिटीजन्स आर द बिगर फोर्स, प्योरली इन नंबर, प्योरली इन इम्पैक्ट. So अगर हमारे behaviors change हो जाएं, then they are just aiding us and helping us. Absolutely. That really is the heart of the matter, the crux of the matter. Ravi wanted to say. Yes, Ravi. I just want to tell something very interesting. Like, you're from Ambala and you are in Patiala. Punjab. Punjab. So when I go to Patiala, which is my hometown,
I see a lot of competition in Murthal in the in all the hotels. They say our toilets are the best toilets. Not just our parathas, but also our they are the cleanest toilets here. So they have the boards of the cleanest toilets. Nice. The whole belt in the Murthal, they compete for the finest and the cleanest toilets. नहीं वहाँ तो वो मूर्थल में एक जगह कर रहे हैं, इंदौर में तो आप कहीं भी जाइए सब साफ है, तो वो तो वही टीम वहीं से चैंपियनशिप ले गई. But we've got something special to present. We do have something very special to present, because as we've been saying that this is really a mission to get everyone involved, Mission Swachhta or Paani. We put together a preamble and we want to share that with Paani ji, Isha ji, and of course we will have it sent to Pratibha ji as well. This is really a mark of our gratitude for all the amazing work that you've done, an appreciation on behalf of Network 18 for doing what you've done. So can we have the preamble? Parineeti, I'm going to request you to please hand it over. Hand it over to Paani ji and also Isha ji. Oh, wonderful. May I do a joint? Yeah, and you can open Pratibha ji, we'll send yours. You can open it. You can open it, and please hold it out. See, Constitution में हमारा preamble है, और स्वच्छता और पानी में भी यहाँ हार्पिक नेटवर्क 18 का preamble है. So that is something which we must not forget. So this is special, the thought process. The idea is that we'll take this pledge. तो ये स्वच्छता संकल्प है. मैं चाहूंगा कि इस preamble के जरिए आप भी इस मैसेज को अपने अपने एरियाज में जाकर इसको प्लीज ले जाएं. प्रतिभा जी, आपकी और भी आ रहा है ये preamble, and we will want you to send us a nice picture. Thank you so much. We appreciate your presence. Thank you very much for joining us here. Thank you so much. Thank you. I'm here only, right now. जी, सबसे बड़ा स्वच्छता और पानी, यही हमारा मिशन है. सबसे बड़ा टेलीथॉन यहाँ इस मंच पर 4 नंबर 1 चैनल्स आपके लिए साइमल्टेनियस इस ब्रॉडकास्ट को लेकर आ रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अहमियत क्या है, कितना ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. ये टेलीथॉन जारी रहेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद.